तो मुझे हम्म। लगा लोकेशन पूछ रहे हैं अब तो पक्का ये लोग देंगे ही मुझे। मैंने लोकेशन बताया, सब कुछ किया, उन्होंने बोला ठीक है वी आर सिलेक्टिंग यू। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओ वो सेलेक्टिंग, हाँ ठीक है, ये फाइव हो गया, ये तो हो गया। एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट, आई वॉज नॉट देयर। So everything, I always believe in this statement, everything happens for a reason. हम्म। So I always remind this to myself that everything happens for a reason. Hello and welcome back. This is your host Anisha. Welcome to another catch-up session with me. Like always, today also we have a very interesting guest, YLB alumni per se, with us. And let's see who is joining us today. Hi, welcome Anushka. Good evening, ma'am. Hi, how are you, Anushka? How's life? Great, great, ma'am. What about you? Great. Yes, Everything's great. Blessed. yes. Yes, how's your health, Anushka? What's going on? Everything is perfectly fine, ma'am. Great. So, first of all, let me thank you for joining us today, for taking out some time and being with us here. And I believe that this session is going to be very insightful. We are going to talk a lot about different interview processes, what was your challenges, and everything that the drill that we do at catch up sessions. Yes, So, ma'am. without a waste, let's start. Anushka, why don't we start with a brief introduction of yours? Sure. So, good evening, everyone. Myself Anoushka Singh, and I'm from Faridabad, Haryana. I have completed my schooling from Vanasthali University, Jaipur, and completing my passion and pursuing B.Sc HHA from IHM Pusa. I have completed my industrial training from Low Meridian, New Delhi, and I have a nuclear family of four: my mother, my father, brother, and me. My area of interest is housekeeping, and in my leisure time, I love doing photography and videography of nature and sceneries. And for improving myself, I'm constantly learning new skills, reading articles, daily newspapers, practicing self reflection to develop myself, and also attending industry related events. Thank you. Perfect. Thank you for sharing that, Anushka. So let's kickstart. Let's jump onto the questions that we were having, right? We'll talk about your passion of photography and everything in the later part of the video. But let's Done. start with why are we here? So, management trainee interviews. Why don't we start with how was your journey in this entire process? How many companies did you actually sit for? So, starting from the management training programs, I sat for different companies. First one was Roseate, Sodexos, Oberoi's, Hyatt, Hilton, Marriott, Accor, and ITC. Major companies are there. I sat for every company, and it was great. Like the experience is totally different. Starting from like the management training program, the company was offering everything like the entry level positions, management training programs, and ये जो टाइम है ना, ये ऐसा लगता है कि सारा प्रेशर है हमारे पास कि जॉब भी चाहिए, कॉलेज का आखिरी साल भी इंजॉय करना है। पर बहुत ये है कि एक बार जब हमारे पास जॉब होती है तो वो जर्नी हम याद करते हैं कि वो क्या हम कैसे ट्रैवल कर रहे थे पूरा। वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो वो हम इंटरव्यूज शुरू कर रहे थे, एक एक इंटरव्यू का, और ऐसा भी नहीं होता है एक कंपनी का सिर्फ दो राउंड्स है। मेनी कंपनीज हैव 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड्स। तो वो डेली एक प्रेशर है दिमाग में कि आपको जॉब चाहिए, और वो एक एक पीयर प्रेशर भी होता है कि बस कॉलेज भी खत्म होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। एक मेमोरेबल पार्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ का, जो याद रहेगा हमेशा। नहीं, डेफिनेटली मैं इस चीज पे आती अभी अनुष्का। आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी, बहुत मेमोरेबल पार्ट है, पर ट्रस्ट मी एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडिड, ये बहुत स्ट्रेसफुल पार्ट है। नाउ दैट यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यू आर सेइंग कि बहुत
इंटरेस्टिंग था, इजी था और बहुत फन था, हम बाद में याद करेंगे। पर जब आप वहां पे होते हो, इट्स सो स्ट्रेसफुल, इतने सारे नंबर ऑफ राउंड्स, राइट? इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, है ना? यू आर कॉन्स्टेंटली एंशियस, क्या हो रहा है, रिजल्ट पेंडिंग है, ये वो, एंड उसके साथ उन सब के बीच में यू हैव टू डू योर कॉलेज इज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टुगेदर, एंड एज यू सेड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करना है क्योंकि लास्ट ईयर है। इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आज अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू है, बीट एक्स कंपनी, आप हम उसके लिए रेडी होके जा रहे हैं कि आज हमारा फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, और रेडी होके हम जा रहे हैं, पर ये पता भी नहीं है कि वो, ऐसा भी ना हो कि फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाए, ऐसा भी ना हो। अब वो जिस पैशन से हम तैयार हो रहे होते हैं, ये पता भी नहीं है कि वो कंटिन्यू आगे प्रोसेस होगा, रिजल्ट्स पेंडिंग है। वो ऐसे है कि नींद भी नहीं आती रात को कि हाथ में कुछ नहीं है, अभी एक भी नौकरी नहीं है, और टाइम पास आ रहा है, कंपनीज क्रॉस होती जा रही हैं। तो हाँ, एकदम करेक्ट पार्ट है कि मैं अब अदर साइड पे पहुंच चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे वो पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेसफुल था, वो बहुत प्रेशराइज, एक फैमिली तरफ से भी प्रेशर होता है और एक खुद को भी कि अभी तो कुछ नहीं है, 3 साल होने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा, हाथ में कुछ है नहीं। तो दोनों मतलब आफ्टर द path is crossed, it is very interesting, but still the journey was very beautiful. The struggles, the things we were facing, daily interviews, daily, like, different questions that we were not expecting, the questions were there. राइट, डेफिनेटली। हाँ, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग बहुत स्ट्रेसफुल होता है, Hmm. डेफिनेटली। हम वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद वी कैन सर्टनली से कि हाँ, नाउ इट्स गुड, नाउ आई कैन रिफ्लेक्ट बैक एंड सी एंड एंजॉय दैट। इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अनुष्का। ये जो आपने कहा कि इतना स्ट्रेसफुल इंटरव्यू प्रोसेस है, हाउ वर यू कीपिंग योर काम ड्यूरिंग दिस टाइम? So, like, throughout the interview process, I was meditating in the morning, and there was like keeping a candle on my bedside table and constantly focusing that for meditation. The This was the process and the meditation process told by Vikram sir only. So first was the this one, and like there are certain things कि वो काम अगर नहीं है हमारे पास, पीसफुल टाइम नहीं चल रहा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी लूज करता है। अगर कि एक में रिजेक्शन है, कंपनीज आ रही है, रिजेक्शन हो रहा है कई बार, तो वो एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए एक मेडिटेशन ही एक, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इजीएस्ट ऑप्शन है कि एक मेंटली काम रहने पे, बिलीव इन योरसेल्फ, be true to yourself and believe in yourself. Like, if there is one rejection, so like analyze everything, what happened, what was the question, like what could be done better, and the things like that कि कुछ कोई क्वेश्चन था कि हम इसका और बेटर आंसर दे सकते थे, तो मे बी ऐसा होता है, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ. Completely agreed. And it's a process. You learn through the process, to be very honest. Yes. And the meditation part you're talking about, that was supposed to, you were supposed to do it with the diya, right? The diya meditation. Yeah. A flame has to be there, so Yeah. candle would also work. ठीक है. We will talk about the rejection part post discussing the interview rounds and everything. Why don't you Done. help us with what all brands interviews you sat for, and how was the interview process looking like for that brand? Like the companies which I sat for, or the company I got. Now let's start with the brands that you interviewed for. How was the interview process for those brands looking like? And can we also talk about one brand at a time? So starting from ITC, so ITC has changed its like interview process. They were previously they were offering like first GD, PI, the usual process, but this time they have changed their process. The first round was online assessment. There were I guess 4 hours for, no, 3 hours for something 200 something questions, and that includes 4 sections: domain knowledge, English, GK, and aptitude. Aptitude.
So 3 hours given for that. Online assessment was there. The I guess 3,000 people were giving the assessment at one time. And after that, first was second was their mm, PI at the property. There was PI with the L&D manager and the area like department head, HOD of the department. And then the third round was the general manager. And the fourth round, that is semi-final, was with Mr. Swaroop Sinha. And the fifth round is still pending, but it will be with Mr. Anil Chadda. And that was the final round. That is the final round that for the ITC. And for the overalls, I was rejected after the PI, but the process was like GD, PI, and then there was a then there was a psychometric test. Then after that there was a property area interview, and then semifinals and finals, I believe. Okay. And for the IHCL, it was like GD or written test. They might take written test prior the GD or after the GD, depends upon the institute. So during my process, written test was the first round, then second was the GD, then third PI, then fourth was the area interview in the property, and fifth was the corporate round with Mrs. Viniti Behel and the head of the department. Okay. These were the rounds. What was this written test about? These written tests includes like kitchen people have their different MCQ kind of paper that includes 60 questions, I believe, and kitchen people have their different question paper, and other operations have different. So we have to complete the test in 1 hour, and that was MCQ that includes the domain, English, aptitude, and basic numericals and Uh, logical reasoning. General knowledge was also there? Uh, I believe 2 4 questions was there, Okay. Okay. All right. and also I sat for Sodexo. So for Sodexo, it was GD, PI. That's it. They were offering GD, PI, and after that, they declared the result on the same day. Oh, great. Very fast. And for Hilton, they were having GD. Hmm. Then they were not having PI. They have like after the GD, they were having their extempore Mm-hmm. extempore round, and Mm-hmm. after that the people who were selected, they were called in the Doubletree by Hilton in the Gurgaon for the third round, third and fourth round. 2 rounds were happened there, and the 2 rounds were first GD, and then second round were 25 panelists were there, and they were asking like PI was taken at that time, and then but 4 rounds were there for Hilton. Okay. So only one student have been selected from our institute from Hilton for Hilton. Okay. And for Accor, I sat. Accor was having GD, PI. Like main every property take GD, PI, or PI may be replaced by extempore sometimes. So GD, PI was same, and uh, after PI, they have shortlisted the list, and then one online assessment were taken for the Accor. And for Accor, every round is elimination round. In the Oberoi's, the psychometric test is not the elimination round, but in Accor, every round is elimination. So online test assessment was there, and after that, 2 rounds in the Hyderabad. Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. So after the online assessment, my IHCL results were out, so I was out from Accor also. And Mm. for Marriott, GD, PI, then one online assessment, and then one online virtual interview. That's it Right. for Marriott. That's it. Okay.
All these brands. Okay. Would love to talk about, you were constantly saying, firstly, GK aptitude and English was some of the rounds when we are talking about online assessment test. How important GK aptitude and basic English when you are going for interviews? So, starting from English plays a very crucial role. Hmm. We, it is not necessary to like frequently speaking English, but the basic English. So, English plays a very important role. वो लोग चेक करते हैं कि आप एक भी सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जिसकी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। मेरे बैच में बहुत बच्चे जिनकी फ्रीक्वेंट इंग्लिश नहीं है पर दे आर हैविंग देयर जॉब्स। Hmm. इट डिपेंड्स कि how you are taking, like what's one single sentence you are able to speak. So first English is very important, and GK, I'm the person who is not good at GK. I Right. always forget. I always like. I was not having a habit to read the newspapers daily or like learn the check the news. I was having the India Today app and something, but I'm not good at GK. So I was trying to cope up with that, but GK also plays a. This thing happened with me in the Marriott's PI. Mm-hmm. They had asked me, uh, tell me like फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर, हाँ अनुष्का बताओ क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया कि मेरे को बाहर जैसे बच्चे इंटरव्यू देके बाहर बाहर आ रहे थे, तो मैंने पूछा बता क्या पूछ रहे हैं, तो बोलते कि जिस डिपार्टमेंट में आप हो और उस डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड, जैसे मैं हाउसकीपिंग के लिए बैठी थी तो मेरे से पूछते कि लाइक हाउ फ्रंट ऑफिस इज कनेक्टेड एंड फ्रंट ऑफिस के क्वेश्चंस टू रिलेट द डिपार्टमेंट। तो मैंने Mm-hmm. सोचा कि हाँ ठीक है, यही मैं अंदर गई, मेरे से पूछा कि बताओ क्या क्या पढ़ के आए हो। मैंने बोला सर ऐसे मैं हाउसकीपिंग के लिए बैठी हूँ इसलिए हाउसकीपिंग, एंड एज फ्रंट ऑफिस इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर हाउसकीपिंग, तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट का पढ़ा है। ठीक है। Right. तो मेरे से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इन दोनों डिपार्टमेंट के अलावा हम आपसे पूछते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसे बोला कि अच्छा जीके पूछते हैं हम। मैंने बोला ओके। तो उसके बाद उन्होंने दो तीन क्वेश्चंस प्रेसिडेंट और बहुत बेसिक बेसिक पूछा। उसके बाद फिर देवर चेकिंग कि आज का न्यूज़ बताना, लास्ट वीक क्या हुआ था कुछ लेटेस्ट, एंड मैंने वो सब नहीं चेक किया था लास्ट वीक का, लास्ट 10 डेज का। तो दैट वाज द पॉइंट आई गॉट टू नो कि रिजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, एंड दैट आल्सो हैपेंड कि वो No, जीके। yes, yes, please. तो वही जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार लक भी साथ दे देता है कि पैनलिस्ट ने नहीं पूछा कुछ भी, पर बेसिक क्वेश्चंस तो लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लाइक चीफ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सारी चीजें जो ऐसे, ये तो लाइक रैंडम कोई भी पूछ सकता है पैनलिस्ट में। Definitely. Why I was asking this question, Anushka, क्योंकि इन यंग लीडर्स बूट कैम्प जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं दैट यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली, है ना, कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स करो, कुछ जीके, बेसिक जीके पढ़ो, है ना, हम्म। न्यूज़पेपर, और थोड़ा अपने आप को करंट अफेयर के साथ अपडेट रखो। तो जस्ट लाइक क्या जरूरत है इसकी, राइट? एंड स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट आप जब इंटरव्यू में जाते हो दे ऑल्सो चेक कि आप कितने अपडेटेड हो। You are अपडेट। going to be a future hotelier. You have to keep yourself updated, right? It's a different perspective. उस पे हम अभी बात नहीं करेंगे जीके क्यों इंपॉर्टेंट है, बट सर्टनली इंटरव्यूज में जब आप जा रहे हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो हाईलाइटेड न्यूज है ना, उसके साथ आप अपडेटेड रहो। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस मैम। उस टाइम पे ये भी था कि यूक्रेन रशिया एंड वो सब वॉर वॉर, वो एक पॉइंट तक याद रहता है, और काफी चीजें ऐसी होती है याद रहती है, पर वो एकदम से पीयर प्रेशर में कुछ याद नहीं आता है, किसकी लड़ाई क्या हुआ था सब भूल जाते हैं। पर वो अगर वो रेगुलर हैबिट होगी तो वो कुछ ना कुछ तो पॉइंट रहेगा ही। ये आप मेरे पीछे ये दो मैप्स दिख रहे होंगे, वर्ल्ड और इंडिया का, ये भी विक्रम सर की सजेशन से ही मैंने ड्यूरिंग मेरा जब स्टार्ट हुआ था यंग लीडर्स बूट कैंप तब मैंने लगाया था फॉर माय रेफरेंस। I'll tell you why. क्योंकि आप ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो who have a global presence. You should know कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्रीज आते हैं, वहाँ पे वेदर क्या है, what is the famous thing there. You should have an idea. Cuisine and Right. some in some countries the like in Indians we bow to show the respect. Some countries have different, like they don't like something, so there is something reason. So everything connects.
the cuisine, the country, the some like about the G20 happened. So that GK plays a very important role. Definitely. And this is how you can like create an impact in your interviews that I am very updated. I do not have the experience, but I do have the knowledge and the current affair, updation with me. Right. Okay. We'll talk about, you were saying group discussions, है ना? आप Hyatt के group discussions की बात कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे brands हैं जिसमें group discussion is the first round and it's a elimination round also. Yes, We'll talk about high group discussion. It's one of the difficult GDs you can have. है ना? Case yes, study based होता है. case Case study. studies and situation handling are the key to your interviews. Practice नहीं करते students और जब group discussion में जाते हैं, they don't know how to start. So help me understand कि how was your experience and what was the GD like? So starting from the first day of my Young Leaders Bootcamp, विक्रम सर ने जीडी शुरू कराया फर्स्ट राउंड, और दैट वाज द डे मैंने कुछ नहीं बोला. ठीक है, Mm-hmm. आई वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. पहले टॉपिक समझ रही हूँ, ऐसा 10 मिनट में आपको 15 बच्चे हैं, 10 मिनट में बोलना है, वो एक प्रेशर भी है और फर्स्ट टाइम था. तो मुझे ऐसा लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, मैं अब अपने आप को देखती हूँ तो मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हुई है एज फॉर पब्लिक स्पीकिंग. सो जीडी काफी हेल्प करी. पहले तो यंग लीडर्स बूट कैंप में विक्रम सर ने, मैं आपने, हमने बहुत सारी जीडीज की प्रैक्टिस करी. तो उसके बाद तो आज मतलब बस एक हायत ही था जो मेरा ब्रांड, जो जिसमें मेरा नहीं हुआ जीडी में, वरना एक भी ब्रांड में ऐसा नहीं था कि मेरा जीडी नहीं हुआ. एवरी ब्रांड मैं बैठी और जीडी वाज द राउंड दैट आई हैव क्लियर्ड, एंड आई वाज हैविंग द कॉन्फिडेंस कि आई विल क्लियर दिस राउंड फॉर श्योर. Mm-hmm. So GD plays a very important role, as they don't only like see your personality, they also see the teamwork you are building. Sometimes what happened that लड़ाई हो जाती है जीडी में, डिबेट टॉपिक शुरू हो जाता है, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट. कि कई बार होता है पूरा ग्रुप रिजेक्ट हो गया है जीडी के लिए, तो वो Mm-hmm. एक टीम बिल्डिंग, वो भी एक्टिविटी भी वो चेक करते हैं कि हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ यू आर मेकिंग योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स able to speak, how you are giving the chance to everybody. So Hyatt ka GD was like they do the moderated one. Like they give you a situation, a case study, and after that the three panelists were there. They were telling the questions like अगर there was a GD कि न्यू होटल ओपन हुआ है, आपने हेल्थ कैंप हमने शुरू करना चाहते हैं, पर हमें उसका पहले फीडबैक देखना है कि हाउ इट गोइंग टू बी. तो उन्होंने ये सिंपल केस स्टडी, बहुत बेसिक है, तो आप कैसे अपनी मार्केटिंग करोगे, और या फिर ऐसे उन्होंने पूरा केस स्टडी था. और उन्होंने सबसे, ऐसा नहीं है कि आप कॉमन डिस्कशन कर सकते हैं, हम बैठे हैं तो आप वो एक सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप बताओ क्या इनकॉर्पोरेट करोगे, अगर ऐसा हो गया तो आप ये क्या करोगे. तो वो एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर देना, और फिर वो थोड़ा ऐसा. जीडी इज ऑल अबाउट 10-15 मिनट्स इन अदर कंपनीज, बट हायर वाज अ ब्रांड जिसका जीडी 1 घंटे चला था, हर ग्रुप का 1 घंटे. देवर मॉडरेटेड क्वेश्चंस, लाइक मॉडरेटेड जीडी वाज देयर कि अगर इस सिचुएशन में अब आपने कोई आंसर दे दिया कि आप ऐसे मार्केटिंग करोगे अपने होटल की, तो बोलेंगे अच्छा ऐसा मार्केटिंग करोगे तो इस गेस्ट को तो बुरा लगेगा, ये होगा वो होगा. वो बहुत सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो एक मॉडरेटेड जीडी होते हैं कि आपको उनके हिसाब से आंसर देना है, आप अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं बोल सकते. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको एकदम क्विक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे, क्या आंसर्स मांग रहे हैं. तो Mm-hmm. वो एक एकदम से लाइक एकदम क्विक थिंकिंग कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, एकदम क्विक माइंड चाहिए, एकदम लाइक सारा लॉजिकल भी सोचना पड़ता है उस टाइम पे. अगर एक बिना प्रैक्टिस के ग्रुप डिस्कशन केस स्टडी बेस्ड आपकी तरफ फेंक दिया जाए और आप हम्म. बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, हाउ डू यू थिंक वो होगा? सो स्टार्टिंग फ्रॉम मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है तो. पर ऐसा होता है कि आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया, पर आपके साथ और 9 या 10 पीपल आर देयर. सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो उन 9 लोगों में से किसी को तो कुछ समझ आया होगा, 4-5 लोगों को तो आया होगा. वेट फॉर द करेक्ट टाइम, बी पेशेंट. एकदम से प्रेशराइज होके कुछ नहीं करना चाहिए, अरे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या फिर ऐसा कुछ.
let other people able to speak. किसी ने Hmm. एक पॉइंट बोला, किसी ने दो पॉइंट बोला, नोट डाउन दैट पॉइंट्स। उसके बाद भी अगर वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए, अगर आप सेम भी बोलोगे तो उसको एक बार चेंज करके अपनी लैंग्वेज में कुछ थोड़ा सा अपना, अब आप, मेरे साथ ऐसा हुआ था, आईएचसीएल में ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि Hmm. मुझे स्टार्टिंग में टॉपिक ही समझ नहीं आया। वो केस स्टडी थी, मुझे टॉपिक, केस स्टडी एक बार एकदम प्रेशर में रीड करने पे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, और 7 minutes वर देयर फॉर द लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द जीडी। सो मेरे Hmm. को समझ ही नहीं आया क्या है। उसके फिर मैंने वेट किया, जो स्टार्टिंग जिसने स्टार्ट करा, एक दो लोगों ने स्टार्ट किया, तब मुझे थोड़े पॉइंट समझ आए, अच्छा ऐसा है ऐसा है। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ कुछ इनकॉर्पोरेट करके, कई बार ऐसा हुआ कि टॉपिक समझ नहीं आया, पर इनकॉर्पोरेट करके कुछ अपना, फिर थोड़ी देर बाद समझ आने लगता है, कंक्लूजन कर दिया। एक ये भी मिथ रहता है, मतलब अभी भी होगा काफी लोगों में मिथ, और अभी भी है, कि जीडी है तो जितना ज्यादा बोलोगे उतना सिलेक्शन होगा, उतनी चांसेस बढ़ जाते, जितना लाइक कुछ लोग होते हैं 10 मिनट में से 5 मिनट बोल ही रहे हैं वो। तो Hmm. मैंने अपने सामने ऐसा होते हुए देखा है कि जिसने सबसे ज्यादा बोला है उसी का रिजेक्शन हुआ है। तो दिस इज अ मिथ कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस है। समटाइम्स यू हैव टू स्पीक लॉजिकल, स्मॉल पॉइंटर्स बट लॉजिकल। No, definitely. In a group of 15 or 20 people, speaking, only speaking will not make you stand out. हम्म। Making a valid, not correct, but a valid point, a very thought oriented point will make you stand out, and that is very important. And जब मैंने भी देखा है, जब young leaders में we do group study, group discussion mocks करते हैं, there's a lot of pointers coming out. जब आप 15-16 लोगों के साथ बैठ के 10 बार ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस करते हो, यू गेट अ थॉट प्रोसेस कि अगर वहां से मुझे ये पॉइंट आ रहा है तो मैं इसको ऐसे डाइवर्ट कर सकती हम्म। हूँ, कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज प्रैक्टिस ऑल्सो दैट मेक्स यू थिंक, है ना, विद लॉजिक एंड रीजनिंग। सो आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी और एंड सिचुएशन हैंडलिंग होती है। body language plays a very important role. डेफिनेटली। The way you are listening others, the way you are respecting others, not to cut in between, that plays a very important role. In some companies, only I only said it one point or 2 points, and I was maintaining the proper body language, the eye contact with my colleagues. There is a some people see like some people feels like कि panelist से connect करना है, like while doing the group discussion to see the panelist, eye contact with the panelist. ऐसा नहीं होता है। जीडी इज, दे हैव गिवन द टॉपिक बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक। वो हमें आपस में डिस्कशन करने, कई बार ऐसा होता है कि काफी रिजेक्शन इसलिए भी होते हैं कि हमने जीडी के टाइम एक्सप्लेन करते टाइम पैनलिस्ट की को आई कांटेक्ट करके हम उन्हें समझाने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एकदम आई कांटेक्ट हम क्योंकि वो देयर इज अ टॉपिक टू डिस्कस अमंग आवर सेल्स ना। डेफिनेटली। तो समटाइम पीपल ट्राई टू मेक द पैनलिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक। तो एंड डज इट ऑल्सो हैपन टू यू कि जब आप यंग लीडर्स में ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप अपने कलीग को, बैचमेट को कट कर देते हैं, एंड देन यू वर टेकन दिस पॉइंट कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, दिस इज वेरी बैड, दिस विल क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ योर्स, पैनल को नहीं देखना है, अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना है। वाज इट एवर हैपन टू यू? ये यस स्टार्टिंग मैम। से लर्न दीस थिंग्स? No, no. The guidance was given by the Vikram sir only. करेक्ट। So because of the virtual session, this has been like communicated to us कि नहीं करना है ये सब, उनको नहीं समझाना है, वो खुद समझे हुए हैं तभी तुम्हें नौकरी देने आए हैं। तो खुद को समझाना है, मतलब आपस में डिस्कशन करना है, वो पैनलिस्ट को नहीं कुछ बोलना है। तो दैट वाज द पॉइंट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ग्रुप डिस्कशंस हाइट के बारे में, बट हाँ, वी कैन कंक्लूड दिस कि केस स्टडीज और सिचुएशन हैंडलिंग, ये प्रैक्टिस यू शुड हैव। केस स्टडीज एंड सिचुएशन एब्सोल्युटली। हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके ग्रुप डिस्कशंस या अलग अलग डिफरेंट राउंड्स आते हैं, राइट? यस। What were your challenges, Anushka, in this entire thing? And what were your learnings now when you can reflect back on that? So starting from the challenges part, I am a introvert person, so public speaking was the thing that was
not able to, like, I was not able to cope up with. But with the help of Young Leaders Bootcamp, during the practices, the mock sessions we were having, the mock GDs we were having, I was okay with that. But the challenges I was facing, like during the GD, I become nervous. I start like the starting when the interview process, the placement was starting in our college. I become nervous, sweating, cold feet. These things were happening, but like the process was going, and after 2-3 companies, वो सेटल हो गया धीरे धीरे कि वो एक हैबिट बन गई कि प्रैक्टिस होते गई। तो उसके बाद वो चीज कोप अप होती गई। तो वो पब्लिक स्पीकिंग भी इसीलिए मेरा एक पॉइंट बनता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी हम्म। कंपेरेटिव, कि मेरे को आंसर पता है पर मैं वो आंसर मैं बना नहीं पा रही हूँ। कि अब मैं सोचती थी कि अगर मैंने जीडी में ये पॉइंट बोला, अगर इंग्लिश की गड़बड़ हो गई, कोई जज कर लिया किसी ने, या फिर ऐसा कर लिया, ये कर लिया। पर वो मॉक सेशंस जब मैंने जीडी के दिए थ्रू यंग लीडर्स बूट कैंप, तो उसके बाद मुझे ये प्रैक्टिस हो गई कि अगर नहीं बोला तो कोई आके आपको कुछ बोलेगा नहीं कि आपने क्यों नहीं बोला, आप बोलो। तो वो था कि आर या पार वाली सिचुएशन है, अगर बोला तो यू विल गो थ्रू, एंड अगर नहीं बोला तो वो कोई ऑप्शन ही खत्म है। आप आपका वो कंपनी से कोई चांस ही नहीं है। तो राइट। ये एक चैलेंज, सबसे पहले एक यही चैलेंज था पब्लिक स्पीकिंग का। और जैसे मैंने पहले बताया कि जीके का एक इशू था कि मेरे को याद नहीं रहती थी पॉइंट्स, कि अच्छा ये कंट्री कैपिटल ये था मिक्स हो जाता था मेरे साथ। तो वो एक ये भी हैबिट है कि मैंने काफी लेट शुरू किया था। लाइक जितना ऐसा होता है कि जितना जब जब पता चले तब शुरू करना चाहिए। तो मुझे 2-4 महीने जब मैंने सेशन यंग लीडर्स बूट कैंप ज्वाइन किया था, तब से जब मुझे पता चला कि ये सब ये जीके न्यूज़ पेपर्स एंड ये सब करना है, तब से आई वाज डूइंग। बट अगर मुझे पहले पता होती ये चीजें तो मे बी मैं और बेटर कर पाती जीके वाले सेक्शन में। तो हम्म। ये दो चैलेंजेस मेजर मेरे साथ थे। No, definitely, Anushka, this is not your challenge only. A majority students who are in college, है ना, चाहे वो अपने आईटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, एमटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या जनरल इंटरव्यूज के लिए भी जा हम्म। रहे हैं, कम्युनिकेशन इज द चैलेंज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इट्स आई एम नॉट टॉकिंग की कम्युनिकेशन में स्पोकन इंग्लिश, है ना, आई एम टॉकिंग की हम्म। कम्युनिकेशन आप समझा ही नहीं हम्म। पा रहे, राइट। अब यंग लीडर्स के साथ वी डू हैव अनदर बैच आपके साथ, तो आई बिलीव इट स्टार्टेड नाउ, सो लास्ट हम्म। ईयर। बट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स के लिए भी इनफैक्ट कम्युनिकेशन बूट कैम्प वेर यू कैन कम एंड प्रैक्टिस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, विद अदर कॉलेज मेट्स ऑफ योर्स, है ना। एंड ट्रस्ट मी, we have seen students who had a fear of speaking in the first session, and now they are very confident. They have their broken English with them still, but they are speaking at least. और सोचो यही बच्चे जाके आगे यंग लीडर्स में एनरोल होंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू मास्टर देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अगर आपको पता है आपका कोई चैलेंज है, स्टार्ट वर्किंग इट नाउ। मैंने लास्ट ईयर 2024 में जून में यंग लीडर्स बूट कैंप ज्वाइन किया था। एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू से दैट कि मेरे उस पर्सनालिटी में और आपकी पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस मैंने देखा है। पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ 10 लोगों के आगे मेरे को स्क्रीन पे बोलने में भी पहले दिक्कत थी। एंड स्टिल आई एम, थोड़ा है इंट्रोवर्ट वाली चीज, पर आई एम एबल टू सी डिफरेंस इन माई सेल्फ, इन विद इन माई सेल्फ, कि क्या चेंजेस आए, क्या लाइक हाउ कॉन्फिडेंट आई एम स्पीकिंग और आई एम कम्युनिकेटिंग विद पीपल। आई लाइक from the day one the personality is totally changed. This is what happens when you choose to invest your in yourself, right? When you choose Yes. to put your efforts in yourself, that is how you grow. Definitely. Anushka, a very important question which I missed in the beginning. What brand are you going to join? Have you decided yet? So I was having different brands in my hand, but because of the college policies, I can take two offer letters from two companies. One is hotel and one is non-hotel. So I am having the IHCL offer letter in my hand, but still there's a last round pending for the Geo World Center. So I was planning to, like, I'm planning to join IHCL for sure because I have got the MT program with them.
So there is a 99.9% chances I'll join that because of the like hotels matters for the initial stage, and the brand is also very good. So I'll join. Maybe there is a sudden, I'm keeping a plan B for myself, but I'll join 99.9% the IHCL. How it must feel very joyful कि मेरे पास इतने offers हैं कि I can choose between कि मैं इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ when you have multiple offers with you, right? Yes, Seems like amazing. that is also a very, sometimes it makes you more confident and more proud. I am having these companies in my hand, but there is also a like काफी लोग ऐसा करते हैं कि हाँ एक जॉब हाथ में आ गई, ये आपका फाइनल है, तो दे आर ओके विद दैट. Mm-hmm. You should also always keep a option with you for Mm-hmm. a plan B. Something happened, something got like, not be it Taj or anything, but कोई भी कंपनी की आपके pros and cons, every company has its pros and cons. तो कभी कुछ बाद में पता चला before the joining, you always have a option कि plan B मेरे पास secure है. For not only jobs, for every situation you have to, like, you should keep a plan B for every situation. So it's very important. And if you are like, if you have the opportunity to take the plan B also, like as I'm saying about hotels and non-hotels offer letters, so why should not? Definitely, and it's your take. It's Yeah. definitely your take because you have been through that. I have seen students who have a brand set in mind कि मुझे Hmm. इसी brand के साथ जाना है, and once they and got the offer letter, they're like, this is my dream brand, this is the brand I want to go with, and they are okay with and that. from day one I was having the brand you were talking, that was the IHCL. I was ekdam focused कि I want this only, Very and nice. destiny played his role It's and I good. got to the interview. It's good when you have multiple options that you can choose from. It Yeah. feels good in that way. ठीक है, I'll ask you a very interesting question. When it comes to interviews, what is one thing you enjoy the most about interviews and one thing you don't like about interviews? The enjoyed part, obviously, जब रिजल्ट्स आते हैं वो एकदम एकदम जो भी हमारी मेहनत पीछे की थी वो एक सक्सेसफुल चीज हमें दिखती है. पर एंजॉय, एक जो पार्ट और मुझे एंजॉयबल लगता था वो था जीडी. Uh-huh. बिकॉज वो कई कई बार कॉन्वर्सेशंस इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पर वो जीडी इतना कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी चल रही होती है कि वो सबसे ज्यादा मजा आता है कि वो एक 10 लोगों के बीच में एक टॉपिक चल रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो एक जीडी वाज द पार्ट की आई वाज एंजॉयिंग इन एवरी कंपनी. लाइक आई वाज क्यूरियस कि नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी में कौन सा टॉपिक मिलेगा कि एक एक अच्छा एक लाइक हेल्दी डिस्कशन हो जिस पे. तो ये एक मेरे को एंजॉयबल पार्ट लगता था जीडी का. और फॉर द वर्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली रिजेक्शंस. कि sometimes it is very like important to know your reality, the reality check. सो रिजेक्शंस एक ऐसा चीज है कि कई बार तो इंटरव्यूज में जैसे मैंने मैरियट का बताया था कि पीआई में ड्यूरिंग, जब वो जीके वाला क्वेश्चन मेरे से पुट अप किया गया 2-4 क्वेश्चंस, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर, तब मुझे पता चल गया था कि ये नहीं होगा मेरा. पर वो रिजेक्शन एक वर्स्ट पार्ट होता है. पर आई वुड सजेस्ट नेवर एक्सपेक्ट कि always leave it, do yourself, do the best, do believe in yourself and be confident. अगर वो कॉन्फिड, कई बार ऐसी चीज होती है कि वो टेक्निक आपने 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, पर तब भी आपकी जॉब उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है. मे दे आर लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी. समटाइम्स इन द highest PI, they were telling, we don't want the technical part, we'll teach you everything. We want a confident personality who is able to learn, who like we can work with them, we will teach everything to you, but the confidence we are looking for. This was the same exact statement from the highest uh, panelist. So the rejection part is very like demotivating also.
It's very now that you are saying it कि accept it, don't expect it, है ना? हम्म. Accept that you got rejected, don't expect anything, है ना? Just do your best. But when you get rejected, when the rejection comes your way, it's very difficult to face that. आपने कैसे face करा? Because it's not a good feeling. Like let's accept it. ये अच्छी Yeah. feeling नहीं होती. You feel super demotivated. What do you do? जब आपको पता है कि ये reject होगा और आपके पास एक result आता है जिसमें rejected लिखा होता है. How do you cope up with that feeling and still get motivated to prepare for some other brand? So I'll not take the name of the company, but this happened with me. Hmm. मैंने जीडी दिया, पीआई दिया, एंड आई वाज क्वालिफाइड जीडी एंड देन पीआई. पीआई में दे वर आस्किंग सारे क्वेश्चंस, टेक्निकल, सिचुएशन हैंडलिंग, सब कुछ हुआ प्रॉपर. आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल गो थ्रू इट. उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अनुष्का टेल मी योर लोकेशन प्रेफरेंस. तो मुझे Hmm. लगा लोकेशन पूछ रहे हैं अब तो पक्का ये लोग देंगे ही मुझे. मैंने लोकेशन बताया, सब कुछ किया. उन्होंने बोला ठीक है, वी आर सिलेक्टिंग यू. ठीक है. आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओ वो सेलेक्टिंग, हाँ ठीक है, ये फाइव हो गया, ये तो हो गया. एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट, आई वाज नॉट देयर उस लिस्ट में. हाँ. ठीक है. उसके बाद लाइक रिजल्ट्स वर आउट आफ्टर द 4-5 डेज. तो वो जो 4-5 दिन थे, तो मुझे लगा हाँ मेरे को तो नौकरी मिल गई, हो गया है मेरा, अब तो कुछ करना नहीं है, अब एक तो नौकरी आ गई, ऐसा ऐसा करके मैंने सोचा. और वो रिजल्ट में नाम नहीं था मेरा. तो दैट वाज द टाइम कि वो रिजेक्शन, उस टाइम आई वॉज ब्रोक. कि मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, रात को नींद नहीं आ रही है, दिमाग में वो सारी टेंशन चल रही है कि एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि वी आर सिलेक्टिंग यू, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट में नाम नहीं था. तो एक ये रिजेक्शन वाला पार्ट, उस टाइम के बाद से मैंने ये एक अपना मंत्रा बना लिया था कि आई विल नेवर एक्सपेक्ट. If Hmm. it will, like I'll do my best, I'll believe in myself. Or sometimes na, it is all about self reflection. After the PI, it is very important to do a self reflection. Sometimes क्या होता है कि आपने मुझसे, if you are the panelist, you are interviewing me, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो मैं इंटरव्यू से आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके और बेटर आंसर दे सकती थी. कई बार ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर में वो चीजें जो मेरे को बोलनी चाहिए थी वो निकली ही नहीं. तो आफ्टर द जस्ट आफ्टर द पीयर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अ सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट व्हाट कुड बी डन बेटर जो पहले हुआ. तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रियलाइज करती हूँ कि वो चीजें जो नेक्स्ट में भी. और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि उस क्वेश्चन के पीआई में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने नहीं आंसर किए. इट्स ओके टू लाइक, नहीं आता कोई बात नहीं, यू विल एक्सेप्ट एंड यू विल गो थ्रू आफ्टर द इंटरव्यू. बट Right. वो क्वेश्चंस अगर आप उस पीआई में सक्सेसफुल भी हो गए, आपको आगे फॉरवर्ड भी किया है, तो जो क्वेश्चंस में आपने आंसर नहीं दिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू go through those questions, and then next round में there are some companies who ask those questions specifically. They note it down and they'll answer you, ask you that specific question कि ये question. So that is very important to believe in yourself, self reflection, and be confident and accept the rejection. Sometimes it is like after the rejection, self reflection will play a very important role. Hmm. No, I completely agree with you. If you really feel कि rejection क्यों मिला, let me work on this. Reflect करो. If you don't want it Yes. to repeat, right? So Hmm. To happen again. Hmm. definitely, definitely. Very interesting. Thank you for sharing that, Anushka. Do you have any mantras or techniques before you go for an interview or any round? Just to calm yourself down, या फिर ऐसा कुछ आप करते हो जिससे आपको हेल्प मिलती है? First of all, like मैं काम रहती हूँ काफी इन चीजों से हम्म. कि जो होगा देखा जाएगा. बस आई एम ट्रू टू माई सेल्फ एंड ऑलवेज ट्रू टू द पैनलिस्ट. क्योंकि आपने अभी इंटरव्यू देना, हमने अभी इंटरव्यू देना शुरू किया है, एंड द पैनलिस्ट हु इज देयर टू गिव यू अ जॉब, वो काफी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं. तो इफ अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो दिल लाइक कैच यू.
कि यहाँ झूठ बोला है, एंड देयर माइट बी अ चांसेस कि आपने एक झूठ बोला, आपको उसको कवर करने के लिए चार झूठ और बोलने पड़ रहे हैं, और वो आगे कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। तो देर इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट की काम रहने का, और उसके बाद फिर ट्रू। तो मैं हमेशा काम रहती हूँ। सेकेंडली, कि आई ऑलवेज टेक अ sugar intake before PI or GD, before any round. I always take a sugar intake because of that, for that energy in myself. So there's a point that I always take a sugar, and that's it, sugar and calm to, like, I stay positive. So if yes, then yes. If no, then no. There is Hmm. always a, like, after the interview, there is always a experience Hmm. and what could be done better. Sometimes, like, it is okay to, like, it is very easy to say right now these statements, but it was, nervousness is, like, कि हर इंटरव्यू प्रोसेस से पहले, हर राउंड से पहले नर्वसनेस इज द थिंग। कोई कितना भी कॉन्फिडेंट हो, नर्वसनेस होगी। तो देयर इज अ फर्स्ट थिंग, आई ऑलवेज टेक अ शुगर इनटेक बिफोर एनी राउंड, so to boost my energy, to, like, always, I used to take a sugar, like chocolate or something, I used to keep in my pocket before GD, before PI. I always used to take that only. And secondly, to stay positive. So everything, I always believe in this statement, everything happens for a reason. Hmm. So I always remind this to myself, that everything happens for a reason. I always follow this statement for everything, be it interview, be it in my life. I always use this statement. And the first one is sugar intake. I always take to keep myself, like, and sugar and water plays a very important role. Sometimes it's okay to, like, confidence is another thing. Nervousness is the thing which happens to everyone. And Definitely. panelist also knows this, that candidate will be nervous, and there is a thing, to, like, what happened with me. I'll again not take the name of the company or the person who were taking. There was a general managers round, for, during my interview process, and what happened? Sometimes it is the person who make you comfort, Hmm. and after entering the room, the where was the interview happening. So four persons were sitting in the panel. Four persons were there, GM and the HOD and HR and some other person was there. So वो इंटरव्यू में घुसते ही आपको, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये कोई इंटरव्यू दे रही हूँ मैं। इतना काम एनवायरनमेंट था, इतनी ईज आउट चीजें थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया वहां पे। Right. कई बार इंटरव्यूअर्स का भी रोल बहुत क्रूशियल प्ले करता है इस जगह पे। कई बार एटमॉस्फेयर इतना प्रेशराइज होता है कि आप, नर्वसनेस तो इज नेसेसरी, वहां होना होगा ही। तो Hmm. during these things, sugar plays a very important role, and the statement everything happens for a reason. No, definitely, I could agree with that. कि it's a mindset that you have to develop. कि जो भी हुआ, let it go. Now that has Hmm. happened. है ना? Second, interviewers, अब यहाँ पे दो चीजें हैं. When you are nervous and the situation is pressure वाला, you tend to fumble, you tend to not be your best, है ना? Not be at your best. But Obvious. when interviewers are calm and they are very friendly, you tend to overshare also sometimes. Yes. So you have to keep track of what you are saying. Don't say unnecessary things. Just keep a track. And this comes with practice. Trust me. जब आप mocks के लिए बैठते हो, when you do it with your mentors, this practice comes. कि oh shit, मैंने ये बोला था. Now I will not repeat that. Let me stick to what I am saying here. Right? It comes with practice. No matter what you are doing. For extra entry also, you can keep a camera in front of you and speak. So this is what practice does to you, right? It keeps your mind sane, what you are saying. Um, and about the sugar part, that is your thing that you like to have a sugar intake. I would say that is a reason for you to have a chocolate. That is what I'm thinking.
reason to have That is a perfect reason to have a chocolate have with a you, chocolate. and you Right. and Perfect. Thank you for sharing everything you have shared, Anushka. It was a very insightful session. Let's wrap this session up with my last question. So, let's say your junior or somebody comes to you who is going to appear for their management trainee interviews or any interviews as such. What would be your piece of advice to them? so first of all, my piece of advice will be कि it's never too late to start anything. जब Right. जागो तब सवेरा. तो कभी भी अगर बीट फर्स्ट ईयर, मुझे ये चीजें अगर फर्स्ट ईयर में पता होती तो मे बी मैं और अच्छा कर सकती थी. पर द स्टेटमेंट जब जागो तभी सवेरा, जब पता चले कि हाँ ये पढ़ना चाहिए हमें, ये इंटरव्यू के लिए नेसेसरी है, स्टार्ट एट दैट टाइम ओनली. ऐसा नहीं कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं थर्ड ईयर में शुरू होते तब पढ़ना, जब इंटरव्यू आएंगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगी, या फिर जब भी शुरू होगा उससे पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले. तो फर्स्ट ईयर में भी काफी, फर्स्ट ईयर इज द थिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज द थिंग कि जब आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप साइड बाय साइड प्रेप कर सकते हो. पर थर्ड ईयर इज द टाइम कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं, आपको कॉलेज भी मैनेज करना है, आपका लास्ट ईयर भी चल रहा है, आपको एंजॉय भी करना है, तो वो चार डायरेक्शंस में आप और नहीं पढ़ाई हो पाती है. तो आई विल एडवाइस कि सबसे पहले कि जब आपको पता चल रहा है कि ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपको उस टाइम पे वो चीजें शुरू कर देनी चाहिए. एंड सेकेंड, बिलीव इन योर सेल्फ. डू लाइक डू एवरीथिंग, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कमी है. कोप अप विद दैट, ट्रू टू योर सेल्फ कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे ये ठीक करना है अपने अंदर, टू बिकम अ पर्सनालिटी दैट पीपल विल एडमायर यू. समटाइम्स कि लिविंग इन योर सेल्फ, ट्रू टू योर सेल्फ, always play an important role. The panelist will judge you on the basis of your knowledge, your personality, and your speaking skills. These are the three things the panelist will judge you. वो कभी आपको ऐसा तो है नहीं कि वो पीछे से जानते हैं आपको कि आप कैसे हो. मे बी आप बहुत अच्छे होगे, पर वो तीन चीजों से मेजरली आपको नोटिस करते हैं. एंड द थर्ड थिंग आई विल सजेस्ट कि इंटर्नशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Mhm. समटाइम्स people ignore the internship part, the 4 months, the internship. Most of the questions, most of the technicals were being asked from that part only. अच्छा, तुम्हारे होटल में ये कैसा था, बेड के साइजेस क्या थे, तुम्हारे होटल्स में कितने रूम थे, किस किस टाइप के रूम्स थे. कई बार कि वहां पे बुफे सेटअप क्या था, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस चीज में यूज होते थे. तो इंटर्नशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ट्राई टू लर्न, ट्राई टू लाइक सी एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस. समटाइम्स जैसे मैंने हाउसकीपिंग में G20 के टाइम काफी चीजें अपने इंटर्नशिप में देखी थी. ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप G20 वर गोइंग ऑन. सो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा G20 था तुम्हारे इंटर्नशिप के टाइम पे, तो बताओ कौन से presidents and people were staying in your hotel. So this was the question I was not able to answer. तो Mhm. कई बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काफी चीजें, कि आप कितना नोटिस करते हो. आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करी जाएगी कि आप कहाँ, जिस टाइम पे आप जहाँ प्रेजेंट हो वहां पे आप सब कुछ नोटिस. आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था इंटर्नशिप में, इंटरव्यू में, कि आपके होटल में जो रेस्टोरेंट था उसमें बुफे सेटअप होता था, तो उसमें से फर्स्ट बुफे से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंड तक क्या क्या लगता था वो बताओ. तो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, but they'll check you how present you were there. So I'll suggest in the three pointers: be true to yourself, believe in yourself, and the second one, internship plays a very important role. And there is never, this is like, it is never too late to start for anything. These Oh, are the definitely. 3 points I'll suggest to my juniors. No, very wise words. And thank you for sharing the IT experience also, that you should also be aware कि आपने IT पे क्या करा, right? And not just what you done, आपने क्या observe करा. Put your observation also कि मैंने ये देखा मेरे होटल में, मैंने IT में ये solve करा. They are looking out for somebody who's very initiative, है ना? Problem solvers,
अगेन वेरी कीन टू डिटेल्स. तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करो अपने इंट्रोडक्शन में, अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को वैसा शेयर करो दैट दे विल आल्सो सी वैल्यू इन यू. एंड थैंक यू अनुष्का फॉर शेयरिंग दैट. But yeah, very interesting. And when you were talking about ki it's never too late. We have seen students जो अभी first year, second year में they are doing communication boot camp with us. They are practicing on their communication, and we have students जिनके July August में placements हैं, and January से they are being with us in Young Leaders because they want to practice. They know where they are lacking, and they are not ready to give up an interview because they did not practice. So this is the attitude that you should come with. Thank you so much, Anushka, for sharing that and taking out time. I hope this session is helpful for everybody who's watching. And yeah, I wish you luck no matter what brand you're going for. I just wish you a lot of luck and success and growth. Be a very good leader of the industry. And yeah, wish to see you soon. Thank you, ma'am, and all thanks to Young Leaders Bootcamp. It played a very important role during my whole process, and still, sir, and you are connected to me, helping throughout my journey, and everything is like perfectly going. And at the end, I would like to say Young Leaders Bootcamp played a very important and very crucial role during my whole process, placement process. And I'll also suggest everyone to join the brand, like join the TBH circle. So it is not about uh, some money, and it is only about investing in yourself. You'll never regret to join the program, be it a workshop, be it a communication workshop, be it anything, be it a Young Leaders Boot Camp. You will never regret कि मैंने क्यों यहाँ पैसे लगाए. You will never regret. I am saying it out, so it will never be a wrong decision from your side. So thank you, ma'am, for hosting me. Thank you. And your finances are a very secondary thing. Hamara Yes, goal is what are the students getting impacted, positively impacted through the workshops जो हम कराते हैं, industry experts जो हमारे panel पे हैं. Are they helping students? Are they impacting it? And to see reviews like you, to see students like you speak highly about young leaders and TBH, it gives us immense pleasure, trust me. And everything comes after that. But yeah, thank you so much, Anushka. And I again wish you a very luck and growth and success for your future. And yeah, I'll see you soon. thank you, ma'am. Thank you.